and always pleasure. Very warm welcome to Jatin, Ayub, Abhinav, Akhil, Nalini, Vidyut. Great to see you also here. And it's always fantastic to have all the Brahmastra participants, all the mentorship participants, and rest every one of you. Very warm welcome. This is Friday at 4, and we are going to discuss today about markets. यार निफ्टी जा रहा है नीचे, लग भी रहा था नीचे जाएगा और जा भी रहा है, लेकिन बार बार पुल बैक दे रहा है. सो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दैट यू सी हियर. ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज, डाउट्स, anything. And बहुत ही quickly, people who are there on YouTube, if you are wanting to join on the Zoom platform, you can join me on the Zoom platform, or I'm just checking with my colleague if the Zoom is sorry, if the YouTube is live. If yes, just share the link with me क्योंकि मेरे इधर कुछ error आ रहा है. Rohit Verma, glad to see you also here. I think after some time. Narendra Mulani, I'm doing fantastic. Thank you for that. Pooja, very warm welcome, and please share across the link with me. And यहाँ पर I'm going to share across a link with you all of a Zoom platform. In case you want to invite any one of your friends, family members, you can do that. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, बहुत क्विकली आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक पोल ले रहा हूं यहाँ पर कि क्या लग रहा है मार्केट आने वाले वीक में. व्हाट डू यू थिंक इज द ट्रेंड ऑफ मार्केट फॉर द कमिंग वीक? What do you think? कहाँ गया मेरा poll? I'm just checking that. The trend, Nifty trend in the coming week is what I'm asking. Every one of you. So participate करिए, and people, if you are listening me on YouTube, do ensure that you have to be, if you want to participate on the Zoom, you need to be here with me. So यहाँ पर poll जो मैं ले रहा हूँ बहुत ही interesting poll होगा. And just give me a second. And यहाँ पर I can see so many of you are and so many of you are expecting markets to actually go down. Let me just stop the poll very quickly, and I'm ending the poll now, and I'm going to share the results. यहाँ पर कुछ तो इशू है. Okay, we can clearly see that there are 41% of the people who are bullish and 59% bearish. So यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का बेरिश है. एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे, there are two Ashish Kyal who have logged in. I'm just checking that. Okay, so I'm just going to share across the link also on the YouTube very quickly. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है, देखिए दोस्तों हुआ क्या. Let us just move forward and talk about it. The overall trend of Nifty had been bearish not only since 2 days, and everyone is blaming the RBI. लेकिन अगर आप daily candle technique follow करते हैं, let me ask you, how many of you are following the daily candlestick technique? Are you following the daily candlestick rules and the techniques that I have talked about? 3 rules. और वो 3 रूल्स के हिसाब से मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं, आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल. ओके, स्टिल बेरिश, एब्सोल्युटली market is still bearish, and we can clearly see there is absolutely नीचे जा रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है यहाँ पर मार्केट में. तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आई एम गोइंग टू ओपन अप माय ट्रेडिंग व्यू क्विकली, एंड वी आर गोइंग टू लुक एट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. वी आर गोइंग टू लुक एट एन इंडिकेटर नोन एज KST. कितने लोगों को KST इंडिकेटर के बारे में जानना है या समझना है, इज व्हाट आई एम आस्किंग राइट नाउ. KST के बारे में कितने लोग जानते हैं या समझना चाहते हैं? I'll share the screen very quickly. And KST is known as no sure thing. No sure thing means no, KNOW, no sure thing. 3 कैंडलस्टिक रूल के बारे में काफी सारे जन पूछ रहे हैं, उसके बारे में हम कल 11 बजे डिस्कस करेंगे दोस्तों. एक फ्री एक्सक्लूसिव वेबिनार है which I'm going to keep across. We will discuss that in that the 3 candlestick rule. Why is it bearish? How we are going to go about it? My colleague will share the link. Ensure you all are registering for that. And very quickly, I'm going to now also tell you one thing. So देखिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए there are 2 most important elements.
प्राइस एंड टाइम, ठीक है। प्राइस फोकस इज अबाउट प्राइस एक्शन, looking at those things, and time is whether the time is right or time is not in favor. That is what we want to see. If you have been listening me since about 3 weeks, I have talked about 22118 as the key level derived using Neowave, and I have mentioned about how the overall trend of the market will remain bearish if that level is not crossed on a closing basis. And अभी तक नहीं हुआ है वो लेवल, तो फिलहाल मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन अभी जो करेक्शन मार्केट में दिख रहा है वो डाउन साइड नहीं दिखे, ज्यादा साइडवेज करेक्शन है। सो करेक्शन तो है लेकिन टाइम करेक्शन ज्यादा है, डाउन साइड करेक्शन नहीं है। नाउ ऐसे में अगर हम टाइम इंडिकेटर, व्हाट इज टाइम इंडिकेटर? An indicator that is derived using the parameters of time cycle. Now, what is time cycle? Time cycle is a simple concept which helps to understand when is the possibility of markets to form a low. And वो वही लो पे जाके बार बार बाउंस बैक करता है. That is time cycle. That is what it helps us to understand. Now, if we have to look at time cycle, there is an indicator known as no sure thing, which is derived out of रेट ऑफ चेंज। कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूं मैं, सिंपल रखता हूं। ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर से पता चलता है कि ओवरऑल मोमेंटम जो है वो नीचे बन रहा है या ओवरऑल मोमेंटम जो है वो ऊपर बन रहा है, वो उससे पता चलता है, या मोमेंटम कम हो रहा है। सो इट इज अ टाइम मोमेंटम इंडिकेटर। इट इज डिराइव्ड, व्हाई आई कॉल इट एज अ टाइम इंडिकेटर, बिकॉज उसके जो पैरामीटर्स है, इट इज डिराइव्ड टेकिंग दोज पैरामीटर्स फ्रॉम टाइम साइकिल. And time cycle is a wonderful concept which helps us to understand the possible reversal areas. And यहाँ पर let me just move on further. Am I audible clearly to everyone? कि आवाज कम आ रही है? अगर कम आ रही है तो मैं वापस से चेक करता हूँ. If I am audible properly, okay. So maybe some people are not able to see hear it clearly. So now if I go on the chart now, ठीक है, I'm going to go on the chart. And I'm going to show you a chart which is on the basis of cycles. So let me just share across my screen quickly. And then I'm also going to talk about the overall perspective. So if I'm looking at this chart, okay, from the Neowave perspective, if I'm looking from the Neowave perspective, यहाँ पर देखेंगे तो पूरा राइज जो आया था, that was wave A. We had a wave B down, we had wave C up, wave D down, वेव ई इक्वालिटी विथ सी, जो बहुत पहले हमने डिराइव किया था जब निफ्टी इस लेवल्स पे था, एंड वी डिराइव दिस लेवल 22118. नाउ वी आर इन वेव एफ. लुक्स लाइक वी हैव स्टार्टेड वेव एफ. दैट्स व्हाट आई एम कंटेम्पलेटिंग. एंड दिस वेव एफ इज गोइंग टू टेक बी इक्वल टू दैट ऑफ वेव बी. तो नियर अराउंड ये वाला 20,120 लेवल्स आता है. बट एज अ ट्रेडर, आई एम नॉट गोइंग टू बिल्ड अप माई पोजिशंस नाउ with an aim of 20,127. I will build up my positions now to ensure that my position become risk free and keep riding it on the downside as and when market goes. तो ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है that you do not try to force your view on the market. You try to act basis of the market price action. So and forecasting तो कर रखी है. तो वेव थियरी, नियो वेव जिसे हम कहते हैं, टाइम साइकिल, these are our forecasting tools which helps us to understand the overall maturity of trend, the GPS of the market, and how will prices go from this point to that point. This has to be clubbed with simple price action technique. Now, and that's what. So my aim as of now as a trader is, I have shorted the market. If I have shorted the market, now I'm not going to ensure नहीं मार्केट तो 21-27 पे जाएगा ही जाएगा. नहीं, भाव भगवान छे. Prices can do anything that it wants to do. What I want to ensure is, can I make my positions risk free as soon as possible. तो इसका मतलब है कि यार मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, वो करना है मुझे. वो करने के लिए what will happen if Nifty comes down here 21,600, I will place a stop loss in such a way that I do not lose anymore. Now if it goes down by 1,000 points, brilliant. If it goes down by 500 points, I'll still make money. If it does anything, I'll make money, or I'll get out break even.
That is how you should be trading. Now majority of the traders are trading with the fact that no, I will exit my position only around 20,120 or I lose everything. That's the problem. You don't do that. You have in the back of the mind where it will go, how will it go, but your aim is to ensure to keep your risk every day, managing your risk. That's why I keep telling my Brahmis, keep telling my Brahmastra participants, and the day one which we started with risk management. The end of the day, I mentioned about the same thing. You have to manage the risk. In live trading sessions, we do the same thing. So now what is the time cycle suggested? So ये जो आप lines देख रहे हैं, the black lines, these are Hurst time cycles, which is derived using the concepts of J.M. Hurst. Now, J.M. Hurst was an aeronautical engineer and he used these concepts of time cycle in physics. And he said, यार अगर physics में ऐसा कुछ चलता है तो प्राइस स्टॉक मार्केट पे भी चलेगा. I extended that study of physics of Hurst time cycle to Indian markets and started applying on Indian stocks, Indian commodities, and all of these things. So this is a 55-day cycle. So Nifty 55 days time cycle is suggesting that prices are near the topping zone. Okay, near the topping zone. Now KST indicator will provide the confirmation of momentum. Let me now add a KST indicator on this one. KST is known as no sure thing. That's a momentum indicator which is going to provide me a confirmation if the momentum has substantially reduced in the market. So KST indicator will provide confirmation of momentum and we can see it slowing down significantly. Can you see that? So यहाँ पर ये इंडिकेटर को कैसे देखना है, किस तरीके से फॉलो करना है. यहाँ पर अगर आप इस इंडिकेटर को देख रहे हो, व्हेन आई से दैट द इंडिकेटर इज शोइंग इट शुड स्लो डाउन. एमएसीडी का प्रॉब्लम क्या है? कैन समवन टेल मी? एमएसीडी, आरएसआई एंड केएसटी तीनों का अलग वे है प्लॉट करने का. आरएसआई इज अ क्लासिक इंडिकेटर बट बाउंडेड. ठीक है. सो आरएसआई इज एन इंडिकेटर जो बाउंड है 0 और 100 के बीच में. इट्स अ सुपर इंडिकेटर. आई यूज दैट जस्ट टू सी द स्पीड ऑफ द मार्केट. मतलब यार ट्रेंड में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस है नहीं है, उसके लिए मैं यूज करता हूं. बट एमएसीडी इज डिसेंट इंडिकेटर बट लैगिंग है. मूविंग एवरेज इज अ लैगिंग क्योंकि वो प्लॉट होता है लेटर. बट केएसटी जो है इट इज आरओसी डिराइव्ड इंडिकेटर. सो आरओसी से डिराइव हुआ है एंड वी विल लुक एट इट इन मच डिटेल इन काल चक्र, उसमें देखेंगे. But KST is derived out of ROC, summation of ROC. So it is leading because it gives us a warning earlier than the move. And we can see that indicator has done a crossover earlier. The high was taken out, but still this indicator is falling. And the another high was formed here, but this indicator is still falling, which means kuch to gadbad hai. Now, if this indicator moves below the zero line, that's a very strong indication of a downtrend to be there on the negative side. ये तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे अप्लाई किया. दिस इंडिकेटर हैज टू बी लुक्ड इन कंजंक्शन विद टाइम. अगर मैंने यहाँ पर टाइम के साथ में ये इंडिकेटर को देखा, इफ आई एम अप्लाइंग टाइम साइकिल एंड चेकिंग दिस, द साइकिल शुड टॉप आउट एट द मिडल ऑफ द ट्रेंड and we are on the right side phase of the market. We are on the right hand side phase of the market. And so we can top out around this area. That's what it looks like until 5th of March. So my date is 5th of March, जो मैं काफी समय से आप लोगों को बता भी रहा हूं. But if I, the 3 candlestick rule, and if I have to make an understanding basis of the 3 candlestick rule. Now look at this. I'm not going to explain the 3 candlestick rule now. क्योंकि as I said, I'm going to do that in much detail tomorrow 11 AM exclusive free master class. आप लोगों के लिए मैं रख रहा हूँ, ज्वाइन करना ना भूलिए. And people who are there on YouTube, it's going to be on Zoom, so do not forget to join me on Zoom tomorrow at 11. Now, and right now, do not forget to like, share, and subscribe the channel.
So if I have to tell you, this is a bearish candle. Okay, this is a bearish candle. And from here, there is not a single candle that has closed above the prior candle high. Despite of this attempt, and everyone blaming RBI for the fall. Everyone is blaming RBI for the crash that happened yesterday. भाई डेली कैंडलस्टिक टेक्निक 3 कैंडल रूल के हिसाब से ट्रेंड रिवर्स हुआ ही नहीं था. टुडे ऑल्सो नथिंग हैपेंड. It went down, showed a pullback, and just trading around that area. So essentially, nothing has changed. Right now, what I have to observe is the momentum. Now, to observe the momentum, I will now go on 1 hour time frame and look at the same KST indicator. So if I go on the 1 hour time frame, the KST indicator, if you have been a part of options mantra or Brahmastra, you might be able to tell me, can I say the KST indicator has turned bearish? The overall momentum is negative and the momentum is building on the downside. Do you agree with me? All of you? So why? Because we can see the KST line is below the zero line and the entire movement is downside, which means if you check my tweet and if you have been following me on Twitter, I've been mentioning about the move on the upside as a pullback. Okay, it's a pullback, it's not a trend. And I've been talking about 840 as a level because this is the level which is around 823. उसे थोड़ा सा लीवे दिया स्टॉप लॉस हंटिंग अवॉइड करने के लिए, तो 840 का मेरा लेवल है. अगर 840 के ऊपर निफ्टी चला जाता है तो थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मोमेंटम नेगेटिव है, टाइम नेगेटिव है, लेकिन प्राइसेस कंफर्म करने इंपॉर्टेंट है. If prices again retraces back above this level of 21,960, जो कि यहाँ का कैंडल हाई है 966, then which means that this fall was a trap. लेकिन जब तक वो नहीं ब्रेक करता है, so 21,960 is my important level. If I am already short, I am already short on the market by way of selling calls, by way of buying puts, by way of doing a lot of things. And the short positions were created around this level. So I'm not losing anything. Is anyone trading options and is anyone short on call option? Will understand what I mean to say. क्योंकि कल से आज में अगर आप देखोगे, कॉल ऑप्शन बहुत शार्प डिटोरिएट हुआ है. एनीवन ट्रेडिंग कॉल्स एंड शॉर्टिंग कॉल्स, आर यू सीइंग दिस ऑप्शन स्ट्रैटेजी पीपल? सो यहां पर बहुत शार्प डिटोरिएशन कॉल ऑप्शन में हुआ है. प्राजक्ता, Hiren, everyone, Salman Mistri, yes, you can see that. Which means that even if Nifty now moves back above this level, I'm not going to lose money. I'll be at break even. Now what I'm going to do is, if tomorrow again, मेरा 1 hour candle bullish हो चुका है. If tomorrow again, so this can be, this fall that we are seeing here can be just wave 1, and this can be a zigzag correction, not zigzag, flat correction, possible in form of wave 2, जो फिलहाल चल रहा है. Okay, I am going to stay with the bearish stand unless and until 2 levels are taken out. One is 21,840, that's the level, and then subsequently 21,960, which means कुछ गड़बड़ है, तो ये C wave नहीं है. And my momentum indicator is suggesting the trend is bearish. My time cycle is suggesting the trend is overall down. So this is how we club across my wave theory, my time indicator, and my momentum indicator in order to derive. Now, where do I enter again? If I have to enter again, I might want to enter below the price action area of 21,690. Why 21,690? कैंडलस्टिक प्रोफाइलिंग. अगर आप देखोगे तो ये कैंडल के ऊपर से रिजेक्शन आया नीचे से एंड वापस से ऊपर आया, which means 21,690 is the level where I might think of selling the market. So निफ्टी कंप्लीट ट्रेड सेटअप क्या है मेरा यहाँ पर? यूजिंग सिंपल प्राइस एक्शन एंड KST मेथड is suggesting that 21,690 is important, and this is how I derive the tweet levels. If you want to learn about it, the Twitter levels that I derive is important, and
breach below the same will resume downtrend. So I can take a signal. Upside hurdle 21,840. Okay. And why is that? I've explained it to you. यहां पर बहुत ही सिंपल है. डायमेट्रिक हो सकता है. एफएलडी टारगेट्स देखते हैं. एफएलडी के बारे में जानना है आपको. इफ यू वांट टू लुक एट एफएलडी आई कम टू दैट. So my strategy is very clear right now. Are you with me? क्यों ये स्ट्रेटेजी बनाई, क्या किया मैंने? So it's preferred that we see at least a 15 minutes close. 15 minutes close से थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगा. Hourly is always best, but hourly में हम लेट हो सकते हैं. So it's always preferred that we have at least a 15-minute kind of a close. ठीक है? And for the strategy, what we can always do is, in case of a pullback, I will be converting my options positions into a strangle, from a naked put into a strangle, just in case pullback deeper आ गया ऊपर. So what will happen is, if I'm making money, I'm still making more money by converting my position into strangle, क्योंकि strangle की margin requirement कम हो जाती. Now coming back to the concept of time, and all of these things we are getting to do because KST is a very powerful indicator that helps me with my conviction, plus time cycle, plus Hurst time cycle. Similarly, you can apply these concepts on a 15-minute chart. You can apply this concept on a 5-minute chart, and you can trade that. Now I'm going to come to someone asked about the FLD. So let me come to FLDs and talk about that. FLD is a classic parameter which helps to understand the overall market support, resistance, and if the same is going to be broken, we get a target. So FLD का parameter है 29. ठीक है? Now 29 is something which is derived using time. वहां ये मैं अभी फिलहाल नहीं एक्सप्लेन करूंगा. We will look at it in much detail on काल चक्र. ओके, उसमें मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा. और दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक और चीज मुझे बतानी थी आपको. हैव यू जॉइंड माय व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप लिंक? इफ नॉट, देन आई एम शेयरिंग अक्रॉस अ क्यूआर कोड विथ ऑल ऑफ यू एंड यू कैन जॉइन दैट. फिर हम वापस से आते हैं एफएलडी के ऊपर, जिससे मैं भूल ना जाऊं बाद में आपको बताना, जिससे यू कैन बी इन टच विथ everything that I am doing. So let me just share that QR code and scan करिए, join करिए, and my colleague will share it also on the YouTube. And people on YouTube, do not forget to subscribe to the channel. And we are increasing every single day. The viewers are increasing. It's only because of you all. Otherwise, wouldn't have been possible. So ये QR code है. ले लिया, सबने join किया. ठीक है, आगे बढ़े. So let me now go back on the chart. This is the QR code जो स्कैन करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी मेरा ज्वाइन कर सकते हो. एंड वी हैव अ न्यू ऐप आल्सो गाइस, बाय द वे. आशीष क्याल के नाम से नया ऐप है. एंड वो ऐप आप डाउनलोड करना ना भूलिए. आशीष क्याल के नाम से, आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल जो पुराना ऐप था वो बंद होने वाला है. अगर आप वहां से निकल के नए ऐप में आना है, आशीष क्याल के नाम से, वो ऐप लिंक भी आप लोग के साथ शेयर कर देंगे. सो यहाँ पर शेयर कर दिए लिंक. यहाँ पर iOS की भी है, तो आप नए ऐप पे डाउनलोड करिए. वहां पे आप चार्ट भी अपने पोस्ट कर पाएंगे. ओके. एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे बहुत क्लियरली, एफएलडी ये ब्लैक लाइन है. दिस इज अ टाइम साइकिल कॉन्सेप्ट which I will be able to discuss only in Kal Chakra, but for now I'm just showing you its application. Prices are lying exactly on the FLD. If in case it intersects here, I will get a downside target to the extent of the height of the FLD. So ये मैं measure करूंगा, और इतना नीचे जितना यहाँ से measure किया है उतना नीचे market जा सकता है, which is my target level, which comes to around somewhere around 21,124. So that is the target level which comes as per FLD. Okay, and that is very, very important. So you will have to understand this concept, and you can apply these concepts once you understand the strategy around ये FLD होता क्या है, कैसे plot करना है.
सो वंस वी गेट एन इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के साथ क्लोज होना चाहिए। तो आज का जो लो था, अगर निफ्टी 21,629 के नीचे क्लोज हो जाता है, we'll get a confirmation of an intersection। ये कंफर्मेशन मिलने के बाद में मेरा टारगेट नीचे जो ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा 21,129 के आसपास ना, 21,120 के आसपास का टारगेट लेवल्स विल ओपन अप। इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एफएलडी, एंड दैट्स हाउ वी शुड बी लुकिंग एट दीज indicators and we should be looking at these concepts। तो आगे बढ़ने के पहले दोस्तों यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट है एफएलडी का, यहां तक कि ट्रेंड लाइन भी कैसे बनाई जाती है ये भी कॉन्सेप्ट है मास्टर ऑफ साइकिल्स में या काल चक्र में जो हम करेंगे। इज इट क्लियर? सो नटशेल में जो व्यू है, व्यू बेरिश है। कभी तक बेरिश है? जब तक निफ्टी 21,840 21,960 का लेवल नहीं निकाल देता है। और इनिशिएट कब करना है? 21,690 के नीचे, दैट इज माय की लेवल। एंड 21,630 के नीचे आई कैन डू अ पोजिशनल ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ एफएलडी which is 21,120। Any questions? Can we success in option trading? Of course, if you are the person who is trading options, see the biggest most important thing, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, काफी सारे जन पूछ रहे सर नीचे का टारगेट क्या था। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एफएलडी टारगेट is 21,120। That's the target। Below, close below 21,620, ये इसके नीचे अगर हमने क्लोज किया, विल हैव दैट टारगेट। इज इट क्लियर नाउ? मेनी ऑफ यू आर आस्किंग। सो इस तरीके से हम ये टारगेट डिराइव कर सकते हैं और टाइम के बेसिस से प्योरली ट्रेड कर सकते हैं। So many of you are asking कि can we trade only on the basis of time? Yes, we can trade purely on the basis of time because time is a very powerful instrument। कहते हैं ना कि समय बलवान है, अभाव भगवान से, समय बलवान से, तो वही चीज है। यहाँ पर बहुत क्लियरली व्हाट पोजीशंस आर एज बाय वेव एनालिसिस। सो वेव एनालिसिस निवेदिता आई हैव जस्ट डिस्कस्ड सम टाइम बैक, which is about I've already talked about। So we are looking at completion of this entire fall as wave A here। This is wave B complete and we might be in C leg 21,620 के नीचे। बहुत ही क्लियर डायरेक्शन और टारगेट्स हमें यहाँ से मिल जाएगा बेसिस ऑफ दिस C leg of the trend that we can expect on the downside once it breaks। So 21,120 पहला पड़ाव है, FLD का टारगेट है। That is the first leg basis of the FLD, and this is the level that we are time that we have to look at it। Am I making sense? Is this an indicator? It is an indicator, it's a time indicator, but आज मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे काल चक्र में, which is happening on 24th and 25th of February। I'm taking a very quick poll just to understand how many of you are wanting to be a part or already a part of this wonderful program which is happening on 21st, 24th and 25th Feb or Brahmastra। So if you are a part of Brahmastra in March, then you are already a part of Kal Chakra which is happening on 24th, 25th Feb। ये मैं पोल ले रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। एंड ओके, वेब यूआरएल भी शेयर कर दीजिए इनके साथ में, द लिंक ऑफ वेब यूआरएल जो ऐप का है, वेब यूआरएल लिंक भी शेयर कर दीजिए सो पीपल कैन डाउनलोड द ऐप। एंड I can see so many of you want to be a part of the Kal Chakra, so I'll just briefly explain you। The Kal Chakra is about time cycle, first time cycle, and we will be looking at Gann square of 9, we'll be looking at KST with Pring special K as an indicator, and साथ ही में हम कंप्लीट ट्रेड सेटअप और स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे। आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू गेन एक्सेल स्क्वायर ऑफ 9 का एक्सेल शीट। आई विल बी गिविंग यू स्टॉक्स के टाइम साइकिल जो आप आपके कैलेंडर में सेव कर सकते हो। एंड आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू अक्रॉस द एंटायर स्ट्रेटेजी दैट यू कैन डिराइव यूजिंग काल चक्र। सो उसमें स्टॉक्स एसबीआई, इन्फोसिस, टीसीएस, अगर आपको देखना है पेटीएम कहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये सारी चीजें
कि टाइम साइकिल आप खुद से डिराइव कर पाओगे। वो टाइम्स डिराइव करने के लिए यू नीड टू गिव योर टाइम, एंड माय कलीग विल शेयर द लिंक ऑफ काल चक्र. You can register for that on the link which is going to be shared across and be a part of this wonderful journey. It's going to be really amazing to speak on that, and I've been teaching about time and it's really lovely. So जो FLD कॉन्सेप्ट है वो टाइम है, इनफैक्ट वैली ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट भी टाइम का है. एंड ये लिंक नहीं शेयर करना है, प्लीज शेयर अक्रॉस दी अनदर लिंक विच इज ऑफ MOC, विच इज मास्टर ऑफ साइकिल्स वाला लिंक. कैन यू डू दैट प्लीज? That's the MOC link. That's what. And if you want to, you can be a part of the mentorship program also, which is Brahmastra, that covers everything. Guys, are you there with me? Every one of you? ओके, ऑसम गाइस. सो ये करना है साथ में. एक और चीज है दोस्तों, बहुत क्विकली, वेरी क्विकली, टुमारो एट 11 AM I am going to be there live on Zoom, and we go houseful every single time. Do you want to be a part of this eye-opening masterclass where I'll teach more about time, more about price action? We will derive the path ahead for Nifty in the coming week. We are going to be doing that absolutely. Okay, I can see, much appreciated. I'm watching from HSBC Dubai corporate office, Mirza. Fantastic. I always love to do that. हाँ, जाते जाते. So please share across the link also with everyone for tomorrow's webinar. YouTube पे भी जो link share किए आपने wrong link share किए. Can you please share the correct links for the Master of Cycles also? Can you do that, please, everyone? And लूनार साइकिल के बारे में बात करेंगे, तो एक काम करते हैं दोस्तों, लूनार साइकिल के बारे में आज है अमावस्या. पता है आपको? मेनी ऑफ यू आर नॉट इवन अवेयर दैट टुडे इज अमावस्या. सो बिकॉज यू डोंट बॉदर, आई ऑल्सो नेवर बॉदर. बट हुआ क्या, जब से मैंने ये मून और लूनार साइकिल देखना शुरू किया ना, मार्केट देखने का नजरिया बदल गया. सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट एंड इट वर्क्स, इट हेल्प्स मी. सो लूनार साइकिल के ऊपर अगर आप देखोगे, पिछले 6 से 8 बार मार्केट ने लो बनाया है और बाउंस बैक हुआ. आज भी मार्केट बाउंस बैक तो किया ही है, एंड बाउंस बैक होके मंडे को कंफर्मेशन ट्रेंड मिलेगा हमें. अगर मंडे ट्रेंड पॉजिटिव हो गया तो मतलब वापस ट्रेंड ऊपर का है, क्योंकि ये लूनार साइकिल का कॉन्सेप्ट है. सो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम कल के वेबिनार में करेंगे सुबह 11 बजे, एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग लर्निंग दैट ईच वन ऑफ यू कैन हैव. मीनवाइल, if you want to be a part of this Kal Chakra, I can see Jitini saying, I love Kal Chakra. Everything works fantastic. If you want to be a part of Kal Chakra, you can register on the link which is shared across by my colleague, and you will be a part of Kal Chakra. अगर आपको ये मजा आता है सेशंस देख के दोस्तों, ये जो हम करते हैं, ये सारी चीजें जो सीखते हैं फ्राइडे एट 4 के लाइव से, तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप और हार्ट. यूट्यूब पे वो ऑप्शन भी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और हम कल लूनार साइकिल के बारे में 11 बजे, कमिटेड है मेरा टाइम आप लोगों के लिए. मैं पक्का बताऊंगा कि क्या लूनार साइकिल के हिसाब से होना चाहिए. सो आई कैन सी सो मेनी पीपल आर शेयरिंग देयर हार्ट्स अक्रॉस टू मी. So I'm going to do that, and it's going to be amazing learning tomorrow. So do ensure to become a part of this Kal Chakra, because time is the most important element least talked about. And if you use time cycle alone as for trading, you can do that. लोग बोलते क्या हम खाली टाइम के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस को? Absolutely. I will share the techniques, the strategies, एंड अगर आप चाहते हो कि आपके स्टॉक पे कब रिवर्स होगा वो स्टॉक देखना चाहते हो, तो टाइम को देखना ना भूलें. इट्स द मोस्ट पावरफुल पैरामीटर, मोस्ट लीस्ट टॉक्ड अबाउट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ना. चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पे सभा समाप्त करते हैं. फिर मिलेंगे कल सुबह 11 बजे, एंड आई एम गोइंग टू love talking to you all. Be there on time on the Zoom platform, because we go houseful, and then you will not be able to enter once we go full, है ना. तो बाकी की डिस्कशन कल कंटिन्यू करते हैं. Thank you very much for joining in. Have a wonderful time and become a wonderful trader.